This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. You're watching NTV Houston and this is Usman Khalid Malik. शुरुआत करेंगे अहम हेडलाइंस से। यूएस सेनेट ने आज $300 बिलियन कोरोना वायरस एड बिल को नामंजूर कर दिया है, जो कि सेनेट रिपब्लिकन लीडरशिप की तरफ से प्रपोज किया गया था। मेयर साल्वेस्टर टर्नर और ह्यूस्टन सिटी काउंसिल ने स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम के लिए मजीद $5 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं। न्यूयॉर्क के 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम पर 2001 में हुए अटैक्स की 19th एनिवर्सरी की तैयारियां की जा रही हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट कॉलमनिस्ट बॉब वुडवार्ड की रेवलेशन पर जो बाइडेन कहते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 खतरे को डाउन प्ले करके अमेरिका के लोगों से झूठ बोला है और ट्रंप के पास वायरस के थ्रेट के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो अपना काम ठीक से करने में नाकाम रहे। यूर वॉचिंग एनटीवी ह्यूस्टन और अब न्यूज़ डिटेल्स। यूएस सेनेट ने आज $300 बिलियन कोरोना वायरस एड बिल को नामंजूर कर दिया है, जो कि सेनेट रिपब्लिकन लीडरशिप की तरफ से प्रपोज किया गया था। कोरोना वायरस जो अब तक 190,000 अमेरिकन की जान ले चुका है, उसी के एड बिल को लेकर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच डेडलॉक चल रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मई के महीने में $3 ट्रिलियन का बिल पास किया था, जो कि कोविड-19 से निपटने और लोगों को रिलीफ देने के लिए लाया गया था, लेकिन रिपब्लिकन्स की जानिब से उसे मंजूरी ना मिली, जिसकी बिना पर अब भी ये दोनों राइवल्स एड बिल की रकम को लेकर आगे ना बढ़ने वाली नेगोशिएशंस में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही साथ डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस पेंडेमिक को बर वक्त और सही से हैंडल ना करने पर कसूरवार भी ठहरा रहे हैं। जो बाइडेन, जो इस वक्त नेशनल ओपिनियन पोल्स में लीड करते नजर आ रहे हैं, ने भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पेंडेमिक की मिस हैंडलिंग पर क्रिटिसाइज किया और ये बात बाइडेन की 2020 प्रेसिडेंशियल रेस का सेंटर पीस बनी हुई है। Senators who share the Democratic leader's toxic attitude, who think the real enemy are their political opponents, I assume will follow his lead and vote no. They can tell American families they care more about politics than helping them. But senators who want to move forward will vote yes. They'll vote to advance this process so we can shape it into a bipartisan product and make a law for the American people. That, Madam President, is what working families need. They need us to act. They need us to legislate. Today, they'll see exactly who has their backs. I ask unanimous consent the quorum be dispensed with. Without objection. Now, the Republican leader keeps claiming that his bill is an attempt at a bipartisan solution. But of course, the bill was drafted solely by Republicans, no input from Democrats, and rushed to the floor. Mr. Leader, go look up in the dictionary what bipartisanship is. It's both parties working together, not your party doing a bill and then saying it's bipartisan. न्यूयॉर्क के 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम पर 2001 में हुए अटैक्स की 19th एनिवर्सरी की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इस साल ये इवेंट वैसे नहीं देखा और याद किया जाएगा जैसे हुआ करता था। विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ एक बड़ी सेरेमनी में जमा हुए बगैर जहां हर विक्टिम का नाम लिया जाता था, वहीं इस बार म्यूजियम फ्राइडे के दिन प्री रिकॉर्डेड रीडिंग अरेंज करेगा और इस सेरेमनी को अपनी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम भी करेगा, जबकि विक्टिम्स की फैमिलीज को मेमोरियल पर सुबह के वक्त आने की इजाजत होगी, लेकिन पब्लिक के लिए साइट्स आफ्टरनून के बाद खोली जाएंगी। What was never in doubt was whether we would commemorate. That was a given. This is about the community coming together and saying, this means something to us so profound. We must have it. मेयर साल्वेस्टर टर्नर और ह्यूस्टन सिटी काउंसिल ने स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम के लिए मजीद $5 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं, जिससे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को खासा फायदा पहुंचेगा। डिटेल्स देखते हैं आतिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। कोविड-19 ने जहां यूएस इकोनॉमी को हिट किया है, वहीं स्मॉल बिजनेस भी इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। स्मॉल बिजनेस ऑनर्स की हेल्प के लिए सिटी ऑफ ह्यूस्टन की तरफ से स्पेशल रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया गया था। मेयर टर्नर ऑफ ह्यूस्टन सिटी काउंसिल ने स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम के लिए मजीद $5 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं, ताकि स्मॉल बिजनेस ऑनर की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। याद रहे, जुलाई में सिटी ऑफ ह्यूस्टन की तरफ से स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम के लिए $15 मिलियन एलोकेट किए गए थे, जिसके बाद से बहुत ज्यादा बिजनेस ऑनर ने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। अगस्त 19 से सितंबर 4 तक एलिजिबल स्मॉल बिजनेसेस की तरफ से
सिटी को मोर देन 8500 एप्लीकेशन रिसीव हुई जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी। सब एलिजिबल स्मॉल बिजनेसेस को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सिटी ने इस प्रोग्राम के लिए मजीद $5 मिलियन एलोकेट किए हैं, जिसके बाद से इस रिलीफ प्रोग्राम का टोटल बजट $20 मिलियन है। स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम से बिजनेसेस या चैम्बर मैक्सिमम $50,000 रिसीव कर सकेंगे। बिजनेसेस ये फंड पेरोल, अकाउंट्स पेएबल, रेंट, मॉर्गेज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर एम्प्लॉयज और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए यूज कर सकते हैं। मेयर टर्नर का कहना है, विद दिस infusion of money into small business economic relief program, the city will be able to help more small businesses stay open. For many communities throughout our city, these small businesses are their lifeline and what makes their area special. By providing assistance to help these businesses stay afloat, we can keep more people employed during these trying times. स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर नहीं रखा गया, बल्कि इसके लिए खास वेटेज स्कोरिंग मैट्रिक्स बनाया गया है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट फंड्स को इंश्योर किया जा सके। स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम फंड्स एंड ऑफ द अक्टूबर तक एलिजिबल बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस प्रोग्राम की एप्लीकेशन डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं की जा रही और एलिजिबल बिजनेसेस को प्रायोरिटाइज बेसिस पर फाइनलाइज किया जाएगा, जिसमें जियोग्राफी, एम्प्लॉय मेकअप, एक्सेस टू कैपिटल चैलेंजेस, ईयर्स इन बिजनेस और डिमॉन्स्ट्रेटेड रेजिलियंसी के फैक्टर शामिल हैं। आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। ग्रेटर ह्यूस्टन की बात करें तो एरिया में पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 177,065 हो चुकी है और डेथ टोल 2,392 बताया जा रहा है। इन्फेक्टेड लोगों में से टोटल 148,266 लोग रिकवर भी हुए हैं। ह्यूस्टन सिटी में ओवरऑल कंफर्म केसेस 66,488, डेथ टोल 906 और 53,307 लोग रिकवर हुए। हैरिस काउंटी में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 46,274, डेथ टोल 584 और 43,963 रिकवरीज। फोर्ट बेंड काउंटी में 15,249 केसेस, डेथ टोल 170 और 13,135 रिकवरीज देखी गई। गैवसन काउंटी में 11,101 लोग इन्फेक्टेड हैं, 165 डेथ्स और 8,406 रिकवरीज हैं। मोंटगोमरी काउंटी में केसेस 9,466, 129 पेशेंट्स की मौत हुई और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 6,530 है। ब्राज़ोरिया काउंटी में 9,175 केसेस, डेथ टोल 73 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 6,944, जबकि ब्राज़ोस काउंटी में 5,506 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 57 और रिकवर होने वालों की तादाद 4,424 हो चुकी है। मेडागोडा काउंटी में 965 केसेस, 40 डेथ्स और 806 रिकवरीज। वाशिंगटन काउंटी में 582 केसेस, 46 डेथ्स और 503 रिकवरीज। वार्डन काउंटी में 1,301 केसेस, 28 डेथ्स और 1,021 रिकवरीज, जबकि चैम्बर्स काउंटी में 1,200 केसेस, 12 डेथ्स और 1,132 रिकवरीज देखी गई। वॉकर काउंटी में 3,403 केसेस, 51 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 3,052 हैं। वॉलर काउंटी में 725 केसेस, 9 डेथ्स और 501 रिकवरीज देखी गई। पो काउंटी में पॉजिटिव केसेस 794, 20 डेथ्स और 680 पेशेंट्स रिकवर हुए। ऑस्टिन काउंटी में टोटल 444 केसेस, 7 डेथ्स और 334 रिकवरीज देखी गई। ग्रिम्स काउंटी में 1,031 केसेस, 31 डेथ्स और 926 रिकवरीज। कोलोराडो काउंटी में केसेस 477, 3 डेथ्स और 365 रिकवरीज हैं और सैन जेसिंटो काउंटी में कंफर्म केसेस 208, 8 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 193 हैं। मेयर साल्वेस्टर टर्नर ने ह्यूस्टन में लाइव स्पेशल इवेंट्स रीस्टार्ट करने के हवाले से प्लान का ऐलान कर दिया है। टर्नर ने कहा है कि लाइव स्पेशल इवेंट्स के लिए ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट और मेयर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इवेंट्स ने मिलकर हेल्थ और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर्मुलेट किए हैं। प्रेस ब्रीफिंग में टर्नर का कहना था कि कंट्रोल्ड वेन्यूज में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले लाइव इवेंट्स में ऑडियंस की 25% कैपेसिटी की इजाज़त होगी। प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सभी गेस्ट को मास्क पहनना होंगे और वेन्यू में एंटर होने से पहले टेम्परेचर स्क्रीनिंग ज़रूरी होगी। मेयर ने यह भी बताया कि अनकंट्रोल्ड स्पेसेस और वेन्यूज़ को साल ख़त्म होने तक अप्रूवल नहीं मिल सकता। अनकंट्रोल्ड स्पेसेस या वेन्यूज़ में परेड्स, फन रन्स, वॉक्स, बाइकिंग इवेंट्स और फेस्टिवल्स शामिल हैं। टर्नर ने रिवील किया है कि शहर में कोरोना पॉजिटिव रेट राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 6.6% है, जो कि मेयर के 5% गोल के करीब है। मेयर ने कहा कि अगर रेजिडेंट्स सोशल डिस्टेंसिंग, बेहतर हाइजीन और मास्क की पाबंदी करते रहे तो वायरस को हराया जा सकता है। ह्यूस्टन में बार्कर साइप्रस रोड पर शूटिंग इंसिडेंट में एक ब्लैक शख्स की जान चली गई। अथॉरिटीज़ को मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसिडेंट नारकोटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये बात कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। शूटिंग इंसिडेंट बार्कर साइप्रस के 1800 ब्लॉक में द पैरामाउंट अपार्टमेंट्स के पार्किंग लॉट में रिपोर्ट किया गया।
पुलिस यूनिट्स जब लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें 24 साल का एक शख्स मल्टीपल गन शॉट वुंड्स के साथ मिला। HFD ने विक्टिम को बचाने की कोशिश की लेकिन वो जिंदा ना रह सका। इनिशियल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि विक्टिम का सस्पेक्ट के साथ पार्किंग लॉट में झगड़ा हुआ था जिस पर उसने शूट कर दिया। पुलिस को मिलने वाली कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंसिडेंट नारकोटिक्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो सकी। तीनों सस्पेक्ट्स ब्लैक मेल थे जिनकी एज 20s के आसपास बताई जा रही है और जबकि पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। 3 p.m. in the evening, Northwest officers were dispatched to the 1800 block of Barker Cypress, which is the Paramount Apartments. Once they arrived, they were able to see the deceased victim who had obvious gunshot wounds. HFD arrived, did life-saving measures. Unfortunately, he passed away in the back seat or in the back of the ambulance here on the scene. All we know right now is it's going to be through our initial investigation. It appears that the deceased nor the possible suspects live at this location. That it was most likely a place where they had set up a meet to meet for whatever reason, which we don't know about, which is unknown at this time. We did have multiple witnesses see 3 suspects leave the scene in a dark-colored sedan. That's all we have right now. They're saying these possible suspects, 3 black males in their early 20s. Anybody with information, please contact the Homicide Division or Crime Stoppers. Around 8 o'clock this evening, our Northwest Patrol officers were dispatched to 1800 Barker Cypress on a report of a shooting. Upon arrival, they found an adult male. Fire department arrived, tried to render first aid to the victim. Unfortunately, he's deceased here at the scene. The only information we have right now is there's some kind of an altercation in the parking lot. We're getting initial reports that it may have been over a narcotics transaction. We're not sure at this point. डालस स्ट्रीट के करीब गल्फ फ्रीवे पर गाड़ी के हिट होने से एक शख्स की जान चली गई। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी सीन पर ही मौजूद रही। एक्सीडेंट में गाड़ी के फ्रंट साइड को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। HFD ऑफिसर्स के मुताबिक इंसिडेंट गल्फ फ्रीवे की नॉर्थ बाउंड मेन लेन्स पर पेश आया। गाड़ी की टक्कर लगते ही पेडेस्ट्रियन रोड पर गिरा और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। इंसिडेंट के बाद गाड़ी सीन पर ही मौजूद रही और उसके फ्रंट साइड पर काफ़ी डैमेज भी देखा गया, जबकि पुलिस अब भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई क्लियर स्ट्रैटेजी ना होने और बिजनेसेस की रीओपनिंग में जल्दबाजी की वजह से कोरोना वायरस केसेस बहुत तेज़ी से फैलते नजर आए हैं। मुल्क भर में वायरस से 190,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 6.36 मिलियन से एक्सीड कर गई है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होने वाले स्टेट्स की बात करें तो कैलिफोर्निया में 748,133 पॉजिटिव केसेस, डेथ टोल 13,993 हो चुका है। टेक्सास में टोटल केसेस 667,500 केसेस और 13,923 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। फ्लोरिडा में केसेस 652,259 और डेथ टोल 12,110 हो चुका है। न्यूयॉर्क में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 441,154 और 33,019 पेशेंट्स की मौत हुई। जॉर्जिया में कंफर्म केसेस 287,300 और 6,128 लोगों की मौत हुई। इलिनॉय में 255,613 केसेस और 8,433 डेथ्स रिपोर्ट हुई। एरिज़ोना में कंफर्म केसेस 206,541 और 5,251 लोग मारे गए। न्यू जर्सी में 194,994 इन्फेक्टेड लोग और मरने वालों की तादाद 16,008 हो चुकी है। और नॉर्थ कैरोलिना में 179,536 केसेस और डेथ टोल 2,958 हो चुका है। एक रिनाउंड US इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की आने वाली बुक में रिवील किया गया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर कोविड-19 के खतरे को डाउन प्ले करने का एतराफ़ किया। बुक का नाम रेज रखा गया है, जो कि US वेटरन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड ने लिखी है। ये बुक नेक्स्ट ट्यूसडे पब्लिश की जाएगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर वुडवर्ड की ये दूसरी किताब है। इससे पहले वो फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस लिख चुके हैं, जो कि 2018 में रिलीज की गई थी। न्यू बुक के मुताबिक ट्रंप ने एडमिट किया है कि US में पहली कोविड-19 डेथ से काफ़ी पहले मालूम था कि ये वायरस खतरनाक है और फ्लू से ज़्यादा जानलेवा है, लेकिन उन्होंने पब्लिक में इंटेंशनली ऐसा शो होने नहीं दिया क्योंकि वो पैनिक नहीं फैलाना चाहते थे। वुडवर्ड की बुक पर कमेंट करते हुए व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैली मैकेनानी का कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के हवाले से अमेरिकन्स को इंटेंशनली मिसलीड नहीं किया। उन्होंने ऐसा सिर्फ लोगों को काम और कॉन्फिडेंट रखने के लिए किया। ऐसे चैलेंजिंग वक्त में काम और रेजोल्यूट रहना बहुत ज़रूरी होता है।
The president has never lied to the American public on COVID. The president was expressing calm, and his actions reflect that. Did President Trump intentionally mislead the American people about the threat of COVID? Absolutely not. This president, at a time when you're facing insurmountable challenges, it's important to express confidence. It's important to express calm. Always playing it down, is that expressing calm? It seems dishonest. So this president does what leaders do, good leaders. It's stay calm and resolute at a time when you face an insurmountable challenge. That's what this president has done. It will not appear that Dr. Fauci is also apparently on the record saying of President Trump that his attention span is like a minus number and his sole purpose is to get reelected. That's according to veteran journalist Bob Woodward. I think the bottom line here is that the president, by his own admission in private on the record, acknowledged the depth of this crisis and yet told the American people something very different. How is that, at its core, not an abject betrayal of the public trust? The president has always been clear-eyed with the American people. He was always clear-eyed about the lives we could lose. Again, from this podium, he acknowledged that this was serious back in March, that 100,000, 200,000 lives could be lost. दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पांस को डिफेंड करते हुए कहा है कि उन्हें अपने मुल्क से बहुत प्यार है। वो यहाँ पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते। ये वक्त कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ शो करने का है। ट्रंप ने कहा कि दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन में देखा जाए तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। Well, I think if you said in order to reduce panic, perhaps that's so. The fact is, I'm a cheerleader for this country. I love our country. And I don't want people to be frightened. I don't want to create panic, as you say. And certainly I'm not going to drive this country or the world into a frenzy. We want to show confidence. We want to show strength. We want to show strength as a nation. And that's what I've done. And we've done very well. We've done well from any standard. You look at our numbers compared to other countries, other parts of the world. It's been an amazing job that we've done. I think it's very sad in many respects because the incredible individuals working so hard on it, including our vice president, they've done this great job. They haven't been acknowledged by the news media, and they should, for the job we've done. We don't want to instill panic. We don't want to jump up and down and start shouting that we have a problem that is a tremendous problem, scare everybody. And I'll tell you the other thing, we immediately started buying all over the world. We started buying masks and gowns and everything else. And we don't want to cause pricing to go up to a level that becomes almost unaffordable. So, yeah, in that sense, I agree with it. Yeah. वॉशिंगटन पोस्ट कॉलमनिस्ट बॉब वुडवर्ड की रेवलेशन पर जो बाइडेन कहते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के खतरे को डाउन प्ले करके अमेरिका के लोगों से झूठ बोला है। ट्रंप के पास वायरस के थ्रेट के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने में नाकाम रहे। The day that we hit 190,000 dead in the United States because of COVID-19, we just learned from the Washington Post columnist Bob Woodward that the President of the United States has admitted on tape in February he knew about COVID-19, that it passed through the air. He knew how deadly it was. It was much more deadly than the flu. He knew and purposely played it down. Worse, he lied to the American people. He knowingly and willingly lied about the threat it posed to the country for months. He had the information. He knew how dangerous it was. Now, while this deadly disease ripped through our nation, he failed to do his job on purpose. It was a life and death betrayal of the American people. Experts say that if he had acted just 1 week sooner, 36,000 people would have been saved. 1, Trump hasn't stopped companies from closing plants and sending jobs overseas. 2, he's rewarded companies that have cut jobs and failed to invest here at home with billions of dollars in tax breaks. And 3, he's awarding more and more federal contracts to foreign companies. President Trump has broken just about every promise he's ever made to the American worker. And he's failed. He's failed our economy and our country. But look, would you really expect anything different from this guy? From someone who called those of you and those who are serving in uniform, who have given their lives to the country, losers and suckers? So thank you all.
यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू स्कूल ईयर शुरू होते ही स्टूडेंट्स ने कैंपसेस में लौटना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ मुल्क भर में न्यू कोविड-19 इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ने लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सर्वे में बताया गया है कि पैंडेमिक शुरू होने के बाद अब तक 1000 से ज़्यादा अमेरिकन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 51,000 केसेस और 60 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। टेक्सास, अलाबामा और नॉर्थ कैरोलिना में यूनिवर्सिटीज़ में 4,000 से ज़्यादा केसेस देखे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुल्क की 203 काउंटीज़ का रिव्यू किया जहां एटलीस्ट 10% पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की है। इनमें से हाफ ने अगस्त 1 के बाद पैंडेमिक के वर्स्ट वीक्स एक्सपीरियंस किए और लेटेस्ट फिगर्स में न्यू इन्फेक्शंस पीक होते दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन पर बहुत से लोगों ने कंसर्न शो करते हुए कहा कि इन्फेक्ट होने वाले यंग लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी के इफेक्ट होने का भी खतरा है। कोविड-19 के खिलाफ स्टडी में शामिल होने वाले एक पार्टिसिपेंट में अनएक्सप्लेन्ड इलनेस के बाद एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल्स रोक दिए हैं। एस्ट्राजेनेका को वैक्सीन ट्रायल के लिए फंडिंग NIH की तरफ से दी जा रही है। इस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर फ्रांसिस कॉलिंस ने यूएस कांग्रेस को बताया है कि वैक्सीन की सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। Thank you, Senator. The reason that we're investing not in one but 6 different vaccines is because of the expectation that they won't all work, although it would be lovely if they did. To have a clinical hold, as has been placed on AstraZeneca as of yesterday because of a single serious adverse event, is not at all unprecedented. This certainly happens in any large-scale trial where you have tens of thousands of people invested in taking part, and some of them may get ill. And you always have to try to figure out, is that because of the vaccine, or were they going to get that illness anyway? And with an abundance of caution at a time like this, you put a clinical hold, you investigate carefully to see if anybody else who received that vaccine or any of the other vaccines might have had a similar finding of a spinal cord problem. So this ought to be reassuring to everybody listening when we say we are going to focus first on safety and make no compromises. Here is Exhibit A about how that is happening in practice. If it turns out that that is a real consequence of this vaccine and can be shown to be cause and effect, then all the doses that are currently being manufactured for that will be thrown away because we do not want to issue something that is not safe. ऑरेगन में तेजी से फैलने वाली वाइल्ड फायर्स ने सैकड़ों मकान तबाह कर दिए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर डेथ्स का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। विंड ड्रिवन वाइल्ड फायर से स्टेट में 5 छोटे टाउन्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में डिफरेंट पार्ट्स एक हफ्ते से वाइल्ड फायर्स की लपेट में हैं। एक तरफ 2 दर्जन से ज़्यादा मेजर ब्लेजेस ने कैलिफोर्निया में जगह जगह तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ नेबरिंग स्टेट ऑरेगन में भी सिचुएशन वर्स होती नजर आ रही है। 50 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से आग के शोले तेजी से फैल रहे हैं। ऑरेगन में इस वक्त 35 मेजर ब्लेजेस रिपोर्ट की जा रही हैं, जिन पर काबू पाने के लिए फायर फायरर्स सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर केट ब्राउन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंसानी जानों और स्ट्रक्चर्स के मैसिव लॉस की वजह से ये स्टेट की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन वाइल्ड फायर्स साबित हो सकती हैं। We expect to see a great deal of loss as a result of these fires, both in terms of structures and in terms of human lives. It, as I mentioned earlier, could be the greatest loss in human lives and property due to wildfire in our state's history. My heart goes out to all of the families impacted by this devastating event. ऑरेगन के शहर मेडफोर्ड में अनकंट्रोल्ड वायर फायर्स ने एक मोबाइल होम पार्क का मुकम्मल सफाया कर दिया। हर तरफ धुआं ही धुआं देखा गया, कुछ भी बाकी ना बचा। मोबाइल होम पार्क लौटने वाले रेजिडेंट्स हर तरफ तबाही का मंजर देखकर रोते नजर आए। विजिबली इमोशनल रेजिडेंट्स घरों के जले रिमेन्स में बची कुची चीज़ों की तलाश करते रहे। एक रेजिडेंट का कहना था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि उनके पास अब सिर्फ यही बाकी रह गया। Sheriff's coming through, going level 3, get out. Wow. Get out. And yeah, grab some papers. Grab some papers and stuff. And threw it in. This is it. This is what I've got. What you're wearing right now. This is what I've got. Wow. This is what I've got. I'm so sorry. सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में चाइनीज एनवॉय जैन शांग ने यूएस रिप्रेजेंटेटिव रॉडनी हंटर की तरफ से चाइना पर लगाए गए सारे इल्जाम रिजेक्ट कर दिए। कोविड-19 के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में रॉडनी हंट ने चाइना पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इल्जाम लगाया और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का कसूरवार चाइना को ठहराया था। इन एक्यूजेशंस पर चाइनीज एनवॉय जैन शुआंग ने यूएस को क्रिटिसाइज करते हुए इस मूव को सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म का अब्यूज करार दिया है और कहा है कि यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिकल पर्पसेस की वजह से दूसरों पर ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। The U.S. representative
was absolutely abusing the Security Council platform, was abusing today's meeting. They are spreading political virus. What they are doing here is simply to serve their domestic politics. The administration in this country, they do not focusing on fighting pandemic, but trying their best to shift attention and blaming others. But we are also witnessing resilience, innovation, and inclusive political action to mitigate the impact of some of them. As of today, 9th of September, across all field missions, which number over 100,000 personnel, gender-based violence, including domestic violence, is increasing. Calls to some hotlines have increased 7-fold. और दुनिया का रेयरेस्ट डायमंड अगले महीने ऑक्शन के लिए पेश किया जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सऊदी बायर्स ऑक्शन में यह हीरा 12 से 30 मिलियन डॉलर्स तक का बिक सकता है। सऊदी बायर्स का कहना है कि 102.39 कैरेट का यह डायमंड दुनिया का दूसरा बड़ा ओवल डायमंड है। 2013 में हांगकांग में सऊदी बायर्स ऑक्शन के दौरान 118.28 कैरेट का सबसे बड़ा ओवल डायमंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 30.8 मिलियन डॉलर्स में बिका था। नया डायमंड अक्टूबर 5 को हांगकांग में बगैर रिजर्व पर रखे सिंगल लॉट ऑक्शन में सेल किया जाएगा। सऊदी बायर्स का कहना है कि यह जेम 271 कैरेट रफ से काटा गया है, जो कि 2018 में कनाडा के ओंटारियो में लोकेटेड विक्टर माइन से डिस्कवर किया गया था और इसे 1 साल तक कट और पॉलिश किया गया। We're looking at an exceptional diamond. It's 102.39 carats, D color, which is the best color that you can possibly have, flawless clarity, which means there's not a single inclusion or blemish on the diamond. It's going to be offered for auction in our Hong Kong sale on October 5th, and really exceptionally, we're offering it without reserve and without an estimate. So for the first time, really in our history, we're offering this diamond without reserve, without estimate. And we are truly letting the market decide. Historically, diamonds of this caliber and this size have sold in a range between $10 and $30 million. We feel very confident about what the market is doing right now. We've had a number of sales over the past 6 months, and we've seen amazing global demand for jewelry at every price point, including exceptional stones. And we feel that this is the ideal time, in conjunction with our consignor, really the perfect time to put out a diamond of this quality and of this caliber, and offering without reserve means that we're letting the market decide what the price is going to be. और आइए अब जानते हैं वेदर अपडेट्स। And that's all for now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.